Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope all of you are doing good. Today we will do long question answers and fill in the blanks of chapter 2 inside a computer. We have done short question answers of this chapter in previous lesson. So let's move towards our today's work. Okay, our question number 1 is how control unit controls the computer. कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द कंप्यूटर बाय फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर. कंट्रोल यूनिट के 4 मेन फंक्शंस हैं जिनके ज़रिए वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज़ फेचिंग, सेकंड वन इज़ डिकोडिंग, थर्ड वन इज़ एग्जीक्यूटिंग एंड लास्ट वन इज़ स्टोरिंग. व्हाट इज़ फेचिंग? फेचिंग इज़ टू टेक समथिंग. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सबसे पहले कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन लेता है. अब वो किससे लेता है? वो किसी भी यूज़र से ले सकता है या किसी भी दूसरे कंप्यूटर या सिस्टम से ले सकता है. सबसे पहले वो डेटा या इन्फॉर्मेशन लेता है. आफ्टर दैट सेकेंड वन इज़ डिकोडिंग. उस डेटा या इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है. अब डिकोड का क्या मतलब है कि जो डेटा या इन्फॉर्मेशन होता है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एज़ यू नो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता. कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है, 0 and 1. तो कंप्यूटर उसी फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है. हम तो अपनी तरफ से कोई भी जो डेटा या इन्फॉर्मेशन होती है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में या इस तरह उर्दू में टाइप करते हैं, बट कंप्यूटर उसको अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. और ये काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में. तब कंप्यूटर को वो बात समझ आती है. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, थर्ड वन इज़ एग्जीक्यूटिंग. तीसरा काम क्या है कंट्रोल यूनिट का? कि एग्जीक्यूट करना. कोई भी इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसको एग्जीक्यूट करना. उसके ऊपर जो प्रोसेस या कमांड या ऑपरेशन दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करता है. एंड लास्ट वन इज़ स्टोरिंग द डेटा. अब जो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद उसको क्या करता है? कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करता है. दीज आर द 4 फंक्शंस परफॉर्म बाय कंट्रोल यूनिट. ठीक है. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द कंप्यूटर बाय फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर. Our next question is what is the difference between RAM and ROM? First, we will talk about RAM. RAM stands for Random Access Memory and it stores data temporarily. After that, ROM. ROM stands for Read Only Memory and it stores data permanently. What is the main difference between RAM and ROM? RAM stores data temporarily एंड रोम स्टोर्स डेटा परमानेंटली. रैम पे जो डेटा स्टोर होगा वो टेम्प्रेरी होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई काम कर रहे हैं और एक्सीडेंटली आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया है तो रैम पे जो डेटा स्टोर होगा वो डिलीट हो जाएगा, वो कंप्यूटर की मेमोरी से उड़ जाएगा, लॉस हो जाएगा. एंड रोम पे जो डेटा स्टोर होगा वो परमानेंट होगा. अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ ही हो जाता है एक्सीडेंटली आपसे तो रोम के ऊपर जो डेटा है वो डिलीट नहीं होगा, उसके लॉस का ख़तरा नहीं है आपके पास. सो द मेन डिफरेंस इज़ रैम स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली एंड रोम स्टोर्स डेटा परमानेंटली. रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. डिफाइन हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक programs and documents. It has a large storage capacity. What is hard disk? It is a storage device. डेटा स्टोर करने के लिए डिवाइस है ये एक, ठीक है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स या डॉक्यूमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है. हार्ड डिस्क इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स. इट हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. Next we have fill in the blanks. Number 1. Everything that a computer does is overseen by the dash. And the blank is CPU. Everything that a computer does is seen by the CPU. Number 2.
Dash is permanent type of memory. ROM is permanent type of memory. Read-only memory. So ROM is permanent type of memory that stores data permanently. Third one is all the parts of computer are connected to each other through dash, through motherboard. All the parts of computer are connected to each other through motherboard. Fourth blank is when a hard disk was first introduced, it has dash capacity. It has 10 MB capacity. MB is megabytes. When a hard disk was first introduced, it has 10 megabytes capacity. 10 MB capacity. Last blank is dash regulates the electricity used by computer. Power supply regulates the electricity used by computer. Here the blank is power supply. Power supply regulates the electricity used by computer.